हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम। ग्रेट पैटरसन फॉल के बाद मैं हूँ यहाँ लैम्बर्ट कैसल में। लैम्बर्ट कैसल ग्रेट पैटरसन फॉल से 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पे है एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप बोथ प्लेसेस कवर करो। अगर आप ग्रेट पैटरसन फॉल का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लैम्बर्ट कैसल ग्रेट माउंटेन रिजर्वेशन में लोकेटेड है, जो कि न्यू जर्सी के पैटरसन टाउन में है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैसल एंड देयर आर लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन ग्रेट माउंटेन रिजर्वेशन, बट द की अट्रैक्शन ओवर हियर इज लैम्बर्ट कैसल एंड टावर। देयर आर venomous snake observed in this area, so be careful when you are here, especially when you go toward the tower. Paterson Fall. I am here at Lambert Castle. So down there is the Lambert Castle, and this is the Lambert Tower. You can see how beautiful this tower is. So we are going down to see the castle. It is closed because of COVID now. It's temporarily closed. So we are just going to see it from outside, and then after we will return back to home. लैम्बर्ट कैसल हाइट पे है एंड यहाँ से आप पूरा पैटरसन टाउन एंड न्यूयॉर्क स्काईलाइन देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू ड्रोन से दिखाता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द लैम्बर्ट कैसल। कोविड के कारण कैसल क्लोज्ड है। अभी तो कैसल को सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। सो दिस इज द लैम्बर्ट कैसल एंड वी आर बी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड एंड यू कैन सी आई मीन इनसाइड देयर इज अ वेरी गुड गैलरी inside there, okay, but unfortunately I can't go inside because of COVID. With this I am closing this video. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel and do not forget to like, share and comment. See you in the next travel blog.